Mr. Arora benefited greatly from the TAVR procedure. So what is TAVR? TAVR stands for Transcatheter Aortic Valve Replacement. Mr. Arora is an 80-year-old gentleman who came to see us at Leelavati, Mumbai, all the way from Uttar Pradesh. He had developed severe aortic stenosis. His ejection fraction of the heart had gone down to 25%. He had difficulty in doing his daily activities. He had a prostate problem and could not undergo surgery because of heart issues. So in TAVR, his aortic valve was replaced without open heart surgery. We went from his groin artery, went inside the heart, put the new valve inside the old valve, and it started working immediately. So transcatheter aortic valve replacement, or TAVR, is a boon for patients who are suffering from severe aortic stenosis. No surgery is required, and the new valve functions immediately as soon as it is deployed. He spent just 1 day in ICU. Third day he went home, and surprisingly, before discharge, his heart's efficiency, which was 20% before, improved to 45%. Now at home he is walking 30 to 45 minutes every day, does all his daily activities. He did not develop any heart block, no bleeding, no stroke, and it was an example of a safe outcome in a complex patient with severe aortic stenosis. TAVR makes a difference in lives of patients with severe AS. मैं विनोद कुमार अरोड़ा निवासी बरेली उत्तर प्रदेश से यहाँ बम्बई में लीलावती हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आया था। डॉक्टर ने मुझे टावा सजेस्ट करा। उन्होंने कहा जो लोग 80 साल के हो गए हैं और उनकी बाईपास हो चुकी है, उनके लिए टावा बहुत फायदेमंद है। मैं 80 साल का हो चुका था और मेरी बाईपास सर्जरी भी अब से 25 साल पहले हो चुकी थी। मुझे चलने में बहुत परेशानी होती थी। मैं 10 कदम चल रहा था तो हाँफता था और बिना रुके फिर नहीं चल पाता था। इसलिए मैंने यहाँ पर आकर ये इलाज करा। मुझे डॉक्टर दिपेश के थ्रू डॉक्टर राव का पता लगा। डॉक्टर राव ने मुझे देखा, मुझे समझा और मेरा 18 तारीख को मेरा ऑपरेशन करा। अब ऑपरेशन करने के बाद मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। मैं खूब यहाँ चल फिर रहा हूँ। इस वक्त मैं अपने आप चल रहा हूँ बिना किसी सपोर्ट के। तो उन्हीं सब भाइयों और बहनों को ये कहूँगा जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, बाईपास करवा ली हो, उनको टावा सजेस्ट करें। टावा बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए। धन्यवाद।